Gaur Bhakta Vrindam. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaur Bhakta Vrindam. So today we're reading from Sri Caitanya Caritamrita, Adi Lila chapter 2. On the board we have text 98. Now I'm going to also read, after we chant text 98, we'll go back and review text 97 because you don't remember. This is Kali Yuga. There wouldn't be one person here who could repeat text 97. I explained previously why Srila Prabhupada translated Madhurya Lila first. Now you will see firsthand why he went to not Madhurya Lila. This is Adi Lila. Just see the difference. Guru Parampara Params. Nama Om Vishnu Padak Prasaya Bhutale. Bhakti Bhakti Vedanta Shramani Tidamani. Namaste Sarvati Deve. Nirvisesa Sunyavadi. Nijamatamdasya. Sod Militam Yena Tasmai Sri Garave Namaha. Sri Caitanya Manubhistam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Swapadantiham Bandeham Sri Guru Sri Jatapalakamalam Vaishnavamstam Sri Rupam Sagajatam Sadaganamalita Hey Krishna Karuna Krishna Sagara Leda Sri Krishna. Hare Krishna Karuna Sindhu Jena Bandhu. Goparsha Gopaka Kanta Radha Kantam Namosta. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavan. Vishvana Sutdevi Pramamam. Kalpa Grubhaskya Krupa Sindhu Bevata. Dhanam Bhavanebhyo Vaishnava Monamoha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Angsa Satyavesha Rupe Dvividavatara. Balya Pagunda Dharma Duita Prakatara. Angsa Sakya Vesha Rupe Dvi Vidvatara. Balya Pagunda Dharma Duita Prakara. Angsa Sakya Vesha Rupe Dvi Vidavara. Balya Pagunda Dharma Duita Prakara. Angsa Sakya Vesha Rupe Dvi Vidavatara. Balya Kabanda Dharma Duita Prakara. Angsa Sakya Vesha Rupa Dvi Vidavatara. Balya Kabanda Dharma Duita Prakara.
Haribol, Haribol. Vidvatara. Bhaya Pakagana Dharma Dvaita Prakara. Ansa Sagda Vesharu Vidvatara. Bhaya Pakagana Dharma Dvaita Prakara. Louder. Rupa Dvi Vidvatara. Bhaya Bhagavana Dharma Dvaita Prakara. Louder. Ansa Sakta Vesha Rupa Dvi Vidvatara. Bhaya Pakanda Dharma Dvaita Prakara. Ansa Sakta Vesha Rupi Vidvatara. Bhaya Pakanda Dharma Dvaita Prakara. Angsa of the plenary expansion. Saktavesha of the empowered. Rupe in the forms. Dvidvida, two kinds. Avatara, incarnations. Balya, childhood. Poganda, boyhood. Dharma, characteristics of age. Dui, two. Ta, certainly. Prakara, kinds. Translation. This is referring to Krishna, Bhagavan Sri Tribhanga Krishna. His incarnations are of two kinds, namely partial and empowered. He appears in two ages, childhood and boyhood. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The Vilas forms are 6 in number. Now you understand why Prabhupada skipped Madhurya. This is heady stuff. Heady stuff. The English word is cerebral. See, the cerebellum is the front lobe of the brain that handles intellectual stuff. So this is highly intellectual. This is meant for brahmanas. There's a few future brahmanas sitting out there. So this is real intellect, actually. Otherwise, absent this, it's Maya Prityagan. It doesn't matter if they have a Nobel Prize. You know Nobel Prize? Mr. Nobel invented dynamite. So he became very, very wealthy, and so he realized he needed to do something to counteract the bad karma caused by having invented dynamite. So he was a very wealthy man,
So he left behind a large fund, और उन्होंने काफी सारा धन पीछे छोड़ा and today the interest from that fund are paying for this big prize. और उसी धन से जो ब्याज मिलता है उसी से बड़े-बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं It's given to generally to scientists, professors, सामान्यतः ये प्रोफेसरों को वैज्ञानिकों को ये इनाम दिए जाते हैं big scholars. बड़े-बड़े बुद्धिजीवी स्कॉलर The devotees tried their level best भक्त भी अपना बहुत प्रयास करते हैं to get the Nobel Prize for Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया Well, Kripadas, they would not do it. लेकिन क्योंकि वे कृपण It's too bad. That would have been great if they had pulled that off, but they couldn't do it. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया You know, non-veg. और क्योंकि वे बुद्धिमान नहीं Well, they could not understand Indian culture, you know. और ये पाश्चात्य देशों का संस्कृति What to speak of transcendental culture, Sanatana Dharma, forget it. और वहाँ पर सनातन धर्म या फिर वैष्णव जो So, Maya Pratigan. माया प्रहत ज्ञान Plenty of intelligence. और उनका जो बुद्धि है वो हर ली गई What is the use? और इसका क्या लाभ है Stolen by illusion. वो माया के द्वारा हर ली गई है Ah, Neela Madhava has arrived. Ki jai. So, such big intelligence, it is of no value. और ये इतनी बड़ी बड़ी बुद्धिमानी इसकी कोई भी इसका मूल्य नहीं है Why? क्यों Because none of them know the purpose of life. Then what is the point of all your flowery words and big science? क्योंकि वे कुछ भी नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य क्या है तो इतनी बड़े बड़े बातें करने से क्या फायदा Neither have any solution whatsoever. और उनके पास कोई उपाय भी नहीं Janma Mrityu Jaya Vahi. जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई उपाय नहीं Yes, birth, death, old age, and disease. No solution. जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और व्याधि इसका कोई भी उपाय नहीं है Sometimes they think they have a solution for disease. कई बार वे सोचते हैं कि उनके पास बीमारियों के लिए कुछ उपाय है They're feverishly working in their laboratories now for cure for corona, but they haven't really got it yet. और अब वे अपनी प्रयोगशालाओं में कोरोना के लिए दवाई ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं We have to watch out. They're going to break all their own rules. और हमें देखना है कि वे अपने ही नियमों को तोड़ देंगे They're going to release the antidote vaccination before it's fully tested according to their own rules. और अपने ही नियमों के अनुसार बिना वो परीक्षण किए ही उस दवाई को वैक्सीन को निकाल देंगे So this is Maya Pratigan. और यही है माया प्रहत ज्ञान Knowledge stolen by illusion. माया के द्वारा हर लिया Now they can explain this universe or the origin of the universe. और वे इस ब्रह्मांड के बारे में या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी नहीं बता पाते हैं Called big men. बड़े बड़े विद्वान I suppose later some women might have been added. और उनको Some women may have been added later, I don't know. थोड़े दिनों बाद इस विद्वानों की श्रेणी में कोई और स्त्री भी आ जाएगी Mostly men. ज्यादातर वहाँ पर अभी पुरुष हैं So, intellectual, that's intellectual. और यही बुद्धिजीवी लोगों का That's the cerebellum, that's the front portion of the brain where all the intellectual activity is processed. और दिमाग के आगे का जो भाग होता है जहाँ पे सारी बुद्धिमानी के सारी कार्य होते हैं If that doesn't work properly, duh. अगर वो सही से कार्य नहीं करता तो व्यक्ति मानसिक रूप So everybody sitting here is very intelligent. और आप लोग जो सामने बैठे हैं सब बहुत बुद्धिमान हैं So Madhurya Gopal is giving you, by the mercy of Srila Prabhupada, giving you Caitanya Caritamrita Adi Lila. श्री राधा मदन गोपाल जी प्रभुपाद जी के माध्यम से आपको आदि लीला It's highly technical, but we're supposed to download it anyways. और आपको इसको डाउनलोड करना है You guys are all computer freaks. और आप सब लोग कंप्यूटर फ्रीक्स हैं Download it. डाउनलोड कीजिए Elsewhere in Adi Lila, all positions of the expansions of Chaturvyuha are given. और आदि लीला में चतुर्व्यूह के जो चार विस्तार हैं उनका वर्णन भी दिया है Conch, disc, lotus flower. शंख चक्र गदा पद्म So somehow or other there's only 4 arms, yet multiplied out it comes to 2 full pages of Caitanya Caritamrita describing the different expansions and their different positions and their different names. और हालांकि वैसे तो चार ही हाथ है चार ही ये चीजें हाथ में हो सकती हैं लेकिन चैतन्य चरितामृत में अनेक विस्तारों का वर्णन है अनेक
One of my god brothers was giving a class on Chaitanya Caritamrita. He was joking. He said, "You got that?" Super technical. Nobody could remember unless you're a Shrudidar. You know what is Shrudidar? How many you know what is Shrudidar? Shrudidar means photographic memory. You see or hear it once and it's downloaded. You guys are good, but I don't think there's any Shrudidars sitting here. I know one thing, if I go back to, I'm going back to, not if, I'm going back to Goloka Vrindavan to join with Srila Prabhupada. Eternal Sankirtan party. If Krishna asks me to come back to the material world, I'll say, that's fine, I don't mind coming back to preach, it's very nice. Couple of stipulations. You want to send me back to the material world? No problem. I like teaching Krishna consciousness. Well, if you send me back to the material world, you have to make me a Shrudidar, otherwise I won't go. As a Shrudidar is automatically a super intellectual, knows all the Shastra, hears it once, knows all the Vedas, knows all these things. Shastra, perfect recognition of Shastra. Another impossible, not impossible, but unlikely request. Good health so I could go on preaching. But we see Tribhanga Krishna, he doesn't always do that. Bhaktivinoda Thakur, he almost died from scarlet fever. Srila Prabhupada has so many multiple heart attacks. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur suffered from knee pain. Yes, it's very common in older people, knee pain. Have any of you ever gone to his room in Radhakund? There, the guide will tell you that it's the only Western-style toilet in all of Radhakund. That's because if you have bad knees, it's painful to sit in Indian style. It doesn't work for me because I have, joints that don't work right. They get dry with age. Anyways, so his incarnations are of two kinds, namely partial and empowered. He appears in two ages, childhood and boyhood. So actually we are worshiping Krishna in his teenage years. You know that? Srila Vishnu Chakravarti Thakur explains that great heroes appear to be 1.5 times older than they are. So Krishna was only 10 years old when he entered Mathura. But he appeared to be 15. 15 is considered the prime of youth. Therefore, Krishna is eternally 15. This is the point. Well, you can't tell that by looking at the deity. He looks like he might be at least 20. Radharani is eternally only 14. I had a godbrother who knew the exact number of months for each
14 is an estimate, and 15 for Krishna, and 14 for Radhika. और मेरे गुरु भाई हैं जो सही तरीके से जानते हैं कि कितने वर्ष और कितने महीने की भगवान की एज है, उम्र है. But they're not ordinary persons, so therefore they look older, you see. I mean, not in a bad way. They just look more mature, you know. ये कोई भगवान साधारण मनुष्य की तरह नहीं है. Radhika does not look like she's 15 years old. भगवान हमेशा बड़े ही दिखते Or 14. Radhika does not look like she's 14 years old. No way. हैं. यहाँ राधा रानी की ऐसे नहीं लगती कि वो 14 वर्ष की हैं. Krishna does not look like he's 15. भगवान श्री कृष्ण मदन गोपाल जी भी ऐसे नहीं. Well, that's the statement of Shastra. It's not my opinion. लेकिन ये शास्त्रों का मत है, मेरा मत नहीं. So, boyhood. तो यहाँ पर लिखा है पौगंड कुमार अवस्था. Then Prabhupada explains, the Vilas forms are 6 in number. You see, here we go with the technical stuff. प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, अब तकनीकी विषयों की ओर हम बढ़ रहे हैं. विलास रूपों की संख्या 6 है. Incarnations are of 2 varieties, अवतार 2 प्रकार के हैं. namely Saktavish, empowered, शक्त्यावेश and Angsavesha, partial. तथा अंशावेश. So Angsavesha means the same thing as a portion of a plenary portion of the Lord. और भगवान के अंश के भी अंश अवतार. Whereas the full form of the Lord is different category. लेकिन भगवान के ही जो विस्तार होते हैं वो दूसरे श्रेणी में आते हैं. Plenary portion, as expansions may be plenary portion, but here a different language is used. लेकिन यहाँ पर दूसरी भाषा का प्रयोग किया गया है. वैसे उन्हें कहा जाता है पूर्णांश. So Angshavesha means partial incarnation. तो अंशावेश का अर्थ है अंश अवतार. These incarnations also come within the category of Prabhava ये अवतार भी प्रभाव and Vaibhava manifestation. तथा वैभव प्राकट्यों की कोटि में आते हैं. Childhood and boyhood are 2 special features of the personality of Godhead, Sri Krishna. बाल्य तथा प्रौढ़ भगवान श्री कृष्ण के 2 विशिष्ट स्वरूप हैं. But his permanent feature is his eternal form as an adolescent youth, teenager, किंतु उनका 15. किंतु उनका स्थायी स्वरूप तो उनका नित्य किशोर रूप है. The original personality of Godhead, Sri Krishna, is always worshipped in this eternal adolescent form. मूल भगवान श्री कृष्ण की पूजा सदैव इसी सनातन किशोर रूप में की जाती है. So he looks more like he's 20 at least. और यहाँ पर मदन गोपाल जी लगभग 20 वर्ष के लगते हैं. But you know, Radha and Krishna and the gopis are not ordinary beings, not at all, not even close. लेकिन ऐसा नहीं है, राधा कृष्ण गोपियाँ इत्यादि कोई साधारण जीव नहीं है. When Krishna was 7 years old, जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, that's pre-pubescent, you know, before puberty. और ये प्यूबर्टी से भी पहले की आयु होती है. Puberty means when all the sexual drive kicks in, but normally at age 7 that's not there. और 7 वर्ष की आयु में ये हार्मोन्स ऐसे जागृत नहीं होते हैं. But Krishna and the gopis, not ordinary human beings, no way. लेकिन कृष्ण और राधा रानी गोपियाँ इत्यादि साधारण जीव नहीं हैं. So it's described that when Krishna was lifting Govardhan Hill तो ये बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण with his baby finger only, सिर्फ अपनी छोटी उंगली से he was shaking. तब वह गोवर्धन पर्वत हिल रहा. So you've seen the paintings where the cowherd men and cowherd boys are holding up their sticks, thinking that Krishna needed some help holding up the hill. और उस चित्र में आपने देखा होगा कि जब भगवान गोवर्धन उठाए हुए हैं तो अन्य ब्रजवासी सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण को मदद की जरूरत है, वो अपनी लाठियां गोवर्धन से लगा रहे हैं. It was because Krishna couldn't hold the hill. That wasn't the why he was distracted. The real answer is he was distracted. और ऐसा नहीं कि भगवान गोवर्धन को उठा नहीं पा रहे थे इसलिए वो हिल रहा था. Yes. वास्तविक कारण था कि भगवान What was he distracted by? भगवान किससे विक्षेप उत्पन्न हो रहा था भगवान में. Checking out the front side of the gopi girls. और क्योंकि भगवान के सम्मुख Hey, गोपियाँ थी, they're only about 6 years old, but they ain't no ordinary girls. लेकिन वे भले ही हालांकि वे 6 वर्ष की हैं लेकिन वे कोई साधारण नहीं. Fully mature, fully developed वे पूरी तरह से परिपक्व हैं at age 6 or 6.5 at the most, because they're younger than Krishna. क्योंकि वे भगवान कृष्ण से आयु में कम
So he got distracted. तो भगवान विक्षेपित That's the real reason the mountain was shaking, not because he couldn't hold it up. और भगवान विक्षेपित हो गए थे, इसलिए गोवर्धन पर्वत हिल रहा था। So Krishna is very macho. Macho is an Italian word that had been adopted into English. और इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला में एक शब्द है मैचो। Very sexy, इसका मतलब है बहुत आकर्षक, very powerful, बहुत शक्तिशाली very male. और पुरुषत्व बहुत अधिक होता है। He's the original male, certainly. और भगवान ही वास्तव में Adi male, certainly. आदि पुरुष। Adi Purusha, yes. Well, that's not politically correct for the year 2020, that he's the original Purusha, that men are Purusha. Not particularly correct. तो 2020 के समय में ये कहना कि सिर्फ पुरुष या एंजॉयर जो है भोक्ता सिर्फ पुरुष ही है, ये कहना गलत हो जाएगा। But facts are facts. So he's Purusha, eternally. शाश्वत रूप से वही पुरुष है। So they're just kids, you know. They're just kids. And the Rasa Lila also, they're just kids. रास लीला में भी वे बच्चों की आयु के ही हैं। In Prabhupada's apartment in Los Angeles, there's a painting of Radha and Krishna and the gopis doing Rasa Lila. तो प्रभुपाद के क्वार्टर में लॉस एंजलिस में एक चित्र है जिसमें भगवान गोपियों के साथ में रास नृत्य कर रहे हैं। Maharaj, we also have an altar. Huh? We also have the Ras dance in altar above. Oh. Top So, on the roof. okay. So, in that painting, which is Prabhupada's favorite painting, there were a lot of paintings of Rasa Lila. रास लीला के बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन वो प्रभुपाद को बहुत प्रिय चित्र था। In that painting, Krishna looks to be about 6 years old, और उस चित्र में भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के लग रहे हैं and the gopis look to be about 5. That's Rasa Lila. Get it straight. और उसमें गोपियां 5 वर्ष लग रही हैं और यही रास लीला है। So they have these miniature forms, और वे बच्चों के रूप में हैं, but they're fully developed. लेकिन वे पूर्ण रूप से विकसित हैं। I don't have to describe how they're fully developed. मैं ये नहीं बता सकता कि वो कैसे पूर्ण रूप से विकसित हैं। Full beauty, full sexuality, everything is there at age 5 and 6. तो 5 और 6 वर्ष की आयु में ही उनमें पूर्ण सुंदरता है, पूर्ण पुरुषत्व और स्त्रीत्व है। That was Prabhupada's favorite painting in his room in Los Angeles. और लॉस एंजलिस में प्रभुपाद के कक्ष में यही प्रभुपाद के सबसे प्रिय चित्र था। But you look at most paintings, even some ISKCON artists didn't know that. लेकिन आप देखेंगे ISKCON के जो कलाकार हैं, चित्रकार हैं, वो ये नहीं जानते थे। Or to speak of Indian artists did not know that. और भारतीय चित्रकारों का तो कहना है कि अभी तो कुछ भी नहीं जानते, So most paintings by Indian artists, because they haven't heard from pure devotee. क्योंकि अधिकतर चित्रकारों ने शुद्ध भक्त से नहीं सुना होता है। Krishna and the gopis look like they're 25. और वो जो चित्र बनाते हैं उसमें भगवान कृष्ण और गोपियां 25 Some of वर्ष them, के लगते हैं। they look like Krishna's 30. That's really way off. और जिस चित्र में भगवान श्री कृष्ण 30 The वर्ष truth के हैं, is, वो भी गलत है। Radha and Krishna were just kids when they were engaged in Rasa Lila. That's the actual truth, verified by Prabhupada, considering that painting to be his favorite all-time painting of Rasa Lila. There were quite a few. और रास लीला में भगवान कृष्ण और गोपियां बाल रूप में हैं, 5 और 6 वर्ष की आयु के हैं, और वही सही रास लीला का But- चित्र है, क्योंकि प्रभुपाद ने उसे सबसे पसंद किया। Any other conception is bogus, outright bogus, speculation, not bona fide. Try to understand. So now you look at all these paintings made by Indian artists, not bona fide because they look like they're 25. और जो दूसरे चित्र आप देखते हैं वे प्रमाणिक नहीं हैं, वे बोगस हैं, वे गलत हैं। That's why we have to stay within the parameters of Guru Parampara, you see. Otherwise, Indians are pious, they are attracted by Radha Krishna, is fine. But they don't know how old they are during Rasa Lila. But Prabhupada knows because he is Saktivesh Avatar. He's privy to everything going on in Vrindavan and Goloka. So therefore he knows. तो क्योंकि अन्य जो चित्रकार हैं उन्होंने प्रमाणिक स्रोत से नहीं सुना, इसीलिए हमें भी ISKCON की ही परिधि में रहना चाहिए। प्रभुपाद शक्तिवेश अवतार में जानते थे कि सही क्या है। So childhood and boyhood are two special features of the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. और यहाँ बताया गया है कि बाल्य तथा प्रौढ़ भगवान श्री कृष्ण के दो But his विशिष्ट स्वरूप permanent feature
is eternal form as an adolescent youth. That's what we've been describing. किंतु उनका स्थायी स्वरूप तो उनका नित्य किशोर रूप है। Now we'll go back to the 27th verse. 97 Oh, हम अब 97. 97वें संख्या श्लोक पर जाएंगे। This is very interesting and not easy to understand. ये बहुत ही रुचिकर है लेकिन समझने में आसान नहीं। The personality of God, Sri Krishna, enjoys himself in 6 primary expansions. भगवान श्री कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों में विलास करते हैं। Okay, we can download that. तो इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। His 2 manifestations are Prabhava and Vaibhava. You got that? प्रभाव तथा वैभव ये उनके 2 प्राकट्य हैं। So naturally, Srila Prabhupada has to explain what that means. और इसीलिए प्रभुपाद को निश्चित रूप से ये समझाना ही पड़ेगा। And so he says that now the author of Sri Caitanya Caritamrita, which means Krishna's coverage Goswami, और प्रभुपाद समझाते हुए बताते हैं कि अब श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक he turns कृष्ण के असंख्य he विस्तारों turns का to a वर्णन description of the personality of Godhead in his innumerable expansions. भगवान कृष्ण के असंख्य विस्तारों का वर्णन करते हैं। The Lord primarily expands himself in 2 categories, namely Prabhava and Vaibhava. भगवान मूलतः 2 कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, प्रभाव तथा वैभव। The Prabhava forms are fully potent like Sri Krishna. प्रभाव रूप श्री कृष्ण के ही सदृश पूर्णतः शक्तिशाली होते हैं, And the Vaibhava forms are partially potent. किंतु वैभव रूप आंशिक तौर पर शक्तिशाली होते हैं। The Prabhava forms are manifested in relation with potencies, प्रभाव रूप शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, but the Vaibhava forms are manifested in relation with excellences. जबकि वैभव रूप विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं। So it appears that plenary portions are apparently in the category of Prabhava, potently like Krishna. शक्तिशाली प्रभाव रूप के प्राकट्य 2 प्रकार के होते हैं, But the Prabhava forms are manifested with potencies. Vaibhavi forms are manifested in relation with excellence. यहाँ बताया गया है कि प्रभाव रूप श्री कृष्ण के ही सदृश पूर्णतः शक्तिशाली होते हैं। The potent Prabhava manifestations are also of 2 various kinds, और शक्तिशाली प्रभाव रूप के प्राकट्य भी 2 प्रकार के होते हैं, temporary and eternal. क्षणिक तथा शाश्वत। The Mohini, Hansa, and Shukla forms मोहिनी हंस तथा शुक्ल रूप are manifest only temporarily in terms of a particular age. युग विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्षणिक हैं। Of course, we know Mohini Rupa. हम जानते हैं मोहिनी रूप के बारे में। When Lord Vishnu became this absolutely gorgeous, most beautiful woman we can't imagine. और जिसमें कि मोहिनी रूप जिसमें भगवान विष्णु Once again, the interesting thing is that the sages at Naimarshwaranya, these are all great Paramahansas who are completely free from sex desire. और भगवान इतना सुंदर रूप लेकर के प्रकट हुए, लेकिन हम देखते हैं नैमिषारण्य के जो साधु संत हैं वे परमहंस हैं। But they relish hearing all these descriptions of the bodily parts of these beautiful women. What can we say? It's a fact. Because they were free from lust, you know. वे काम से पूर्णतया मुक्त हैं, फिर भी वे भगवान के शारीरिक सौष्ठव को सुनने में बहुत आकर्षित होते हैं। So, thin waist, big hips, all these things are described in detail. All these beautiful women, and Mohini was most beautiful. और मोहिनी रूप जो कि सबसे सुंदर हैं, उनके जब शरीर का वर्णन करते हैं तो वे ध्यान से सुनते हैं। Because her mission was to attract the demons. और क्योंकि मोहिनी रूप का जो उद्देश्य था वो असुरों को अपनी ओर आकर्षित करना No था। time to tell this whole story. और किसी और समय पूरी हम कथा आपको बताएंगे। So it appears that Prabhava manifestations are plenary portions, it seems. It seems they are the same as plenary portions, although here different language is used. ऐसा लग रहा है कि प्रभाव रूप जो हैं वे भगवान के पूर्णांश So अवतार हैं। we know about Mohini Murti because she is described in detail in the Bhagavatam.
मोहिनी रूप के बारे में हम जानते हैं क्योंकि उनका विस्तार से वर्णन भागवतम में मिलता But Hank's avatar, there's very less, almost no discussion about Hank's avatar in the Bhagavatam. है। भागवतम में हंस अवतार के बारे में बहुत ही कम वर्णन है। Hanksa means swan. हंस का मतलब है So one of the forms of Lord Vishnu was a swan incarnation, but the Bhagavatam does not describe. लेकिन हंस अवतार भगवान विष्णु ने लिया। So if we wanted to look that up, you can go into the database and find Hank's swan incarnation. Something is there. Maharaj, in 11th canto there is description. 11th canto 11th canto, okay. 11वें स्कंद में हंस अवतार के बारे में वर्णन मिलता है। And Shukla forms, और शुक्ल रूप I'm not sure, I'm not familiar with Shukla forms. और शुक्ल रूप से मैं इतना अवगत परिचित नहीं हूँ। So they are Prabhava, that means full expansions, और प्रभाव का अर्थ है कि वे भगवान के पूर्ण विस्तार हैं, but manifest only temporarily in terms of particular age. लेकिन वे युग विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्षणिक रूप से अवतरित होते हैं। Among other Prabhavas, full expansions, who are not very famous according to the material estimation, और भौतिक अनुमान के अनुसार अन्य कम प्रसिद्ध प्रभाव इस प्रकार are हैं। Dhanvantari. धन्वंतरी Of course, in India, Dhanvantari is quite well known. भारत में हाँ धन्वंतरी काफी प्रसिद्ध हैं। He came out of the ocean of milk during the churning of the ocean milk. वे भी क्षीर सागर के मंथन के समय क्षीर सागर से प्रकट हुए। He is the father of Ayurvedic medicine. वे ही आयुर्वेदिक दवाइयों के पिता हैं। Many Ayurvedic doctors will have a painting of Dhanvantari in their office. कई सारे आयुर्वेदिक वैद्य जो होते हैं उनके पास धन्वंतरी जी की Rishabh, of course, is described in detail in Srimad Bhagavatam. ऋषभ अवतार जो है उनका विस्तार से वर्णन भागवतम में मिलता है। Vyasadeva, Vyasa. व्यासदेव भी उनमें से एक हैं प्रभाव। Well, it seems like sometimes Vyasa is described as Saktavesh. तो व्यासदेव जी को कई बार शक्तावेश अवतार के रूप में भी बताया जाता है। Then there's Dattatreya. We don't hear much from the Bhagavatam about Dattatreya. दत्तात्रेय भी प्रभाव रूप हैं लेकिन इनका भी वर्णन भागवतम में इतना नहीं है। He's the four-headed incarnation of Lord Vishnu. और ये चतुर जिनके चार सिर हैं ये अवतार हैं भगवान विष्णु के। And he's surrounded by pet dogs. और वे पालतू कुत्तों के द्वारा घिरे होते हैं। At his place, there's a mountain in South India और दक्षिण भारत में उनका स्थान है where Dattatreya manifested. जहाँ पर कि दत्तात्रेय प्रकट हुए। Why are you so surprised? आपको इतना अचंभित है। What do you know about incarnations, plenary expansions, portions of plenary expansions? What do you know about all these? आप क्या जानते हैं अंश अवतार के बारे में और कला अवतारों के बारे में? Lord Vishnu can assume any form he likes. भगवान विष्णु कुछ भी अवतार ले सकते हैं जो उनको पसंद हो। So he assumed the form of Dattatreya और फिर उन्होंने दत्तात्रेय का रूप लिया with four heads. चार सर के साथ। He was combined incarnation. As far as I know, he was combined incarnation. और वे एक सम्मिलित अवतार थे। So, but he likes dogs. What can we do? If you don't like dogs, don't worship Dattatreya. हमको कुत्ते प्रिय हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको कुत्ते प्रिय नहीं है तो आप उनकी सेवा मत कीजिए। You go to that. I haven't been there, but I've heard only. मैं वहाँ नहीं गया हूँ लेकिन मैंने सुना है। Yes. कन्याकुमारी के पास में Punjabi Bagh? कन्याकुमारी इट्स नियर कन्याकुमारी साउथ इंडिया। Yes. So, well, there are dogs in Punjabi Bagh also, but not in that category. पंजाबी बाग में भी कई कुत्ते हैं लेकिन वो श्रेणी में नहीं आते हैं जो दत्तात्रेय को घेरे रहते हैं। Most temples have dogs. कई सारे मंदिरों के पास कुत्ते होते हैं। Devotees who fell down. तो वे कौन है? वे हैं जो They're devotees. They're devotees. Don't think they're not devotees. ये मत सोचिए कि वे भक्त नहीं हैं। वे वो हैं जो भक्त
I travel to Malaysia whenever I can get a tour guide over there. और जब भी मैं मलेशिया में कोई मुझे So one of the main temples in Malaysia, there was an elderly dog. मलेशिया के मंदिर में एक बहुत ही बुजुर्ग डॉग कुत्ता था He was very regulated in his sadhana. वो अपनी साधना में बहुत नियमित था Don't laugh, it's a true story. हंसिए मत ये सही घटना है Very intelligent dog. बहुत ही बुद्धिमान कुत्ता Because he knew exactly, he would hear the conch blow and he would know it's time for darshan arti. और वो शंख की ध्वनि सुनता था और वो समझ जाता था कि ये दर्शन आरती का समय है So he knew that he couldn't come inside the temple. वो जानता था कि वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है So he would sit on the steps in the sunlight and he would listen to the kirtan and take darshan of the deities, Radha and Krishna. और इसलिए वो मंदिर में नहीं जा सकता तो सीढ़ियों पर बैठ जाता था धूप में और भगवान का कीर्तन सुनता था और दर्शन करता There might not be very many human devotees there, but he was there. If you tell him that he's not a devotee, वहाँ पर काफी मनुष्यों के भक्त नहीं होते थे एक वही अकेला होता था तो आप कहें कि वो भक्त नहीं है he was a devotee. Certainly in his next life, he took human form as a full-on devotee. Certainly because his sadhana was very good. I mean, he didn't come to Mangal Arti, but he came every day for Darshan Arti. तो निश्चित रूप से वो अगले जन्म में एक बहुत ही पूर्ण भक्त बनेगा क्योंकि वो So these animals and creatures associated with devotees, unlimited fortunate. जो ये जानकर भक्तों का संग पाते हैं ये बहुत सौभाग्यशाली है There was one open prasadam hall there, और वहाँ पर एक खुला प्रसाद कक्ष था ground level. धरातल के स्तर पे ग्राउंड लेवल पर So prasadam hall, you know, we don't want dogs in prasadam hall. हम कुत्तों को नहीं चाहते कि प्रसाद हॉल में आए So the dog was sitting in the prasadam hall one day because there was no fence there. और वहाँ पर कोई रोकने के लिए नहीं था इसलिए वो कुत्ता एक दिन So I was trying to shoo him out, and I was trying to say, hey, go, go, go. तो मैं उसे बाहर निकाल रहा था I can read animal consciousness. मैं जानवरों की चेतना समझ He looked at me with a look of complete and total dismay. और उसने मुझे देखा What's the matter with you? Can't you see I'm a devotee? It's a true story. I could read in his eyes. It was clear. He said, I'm a devotee. Why are you trying to make me leave? This place is for devotees. I'm a devotee. It's a true story. तो मैं उसकी आंखों को उसकी चेतना को समझ सका कि वो मुझे कह रहा था कि क्या तुम्हें पता नहीं So, Dattatreya, he keeps himself surrounded by dogs. And so you go to that place in South India, he's on top of a mountain, and there are dogs there. और आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो पहाड़ी की चोटी पर आप देखेंगे दत्तात्रेय जी का स्थान Then Kapila Muni is counted as a Prabhava incarnation. दत्तात्रेय को प्रभाव रूप में गिनती गणना की जाती है And among the Vaibhavi, that means the partial expansions forms are Kurma, और वैभव प्रकाश रूपों में आते हैं कुर्मा Matsya, मत्स्य Narnarayan rishis. नर नारायण ऋषि The Narnarayan rishi, they're up in the Himalayas still. और नर नारायण ऋषि आज भी हिमालयों की Said उच्च श्रेणियों to में be a combined incarnation of Lord Vishnu and Arjuna. और नर नारायण ऋषि भगवान विष्णु और अर्जुन का सम्मिलित अवतार है So therefore, Vaibhava Prakash, इसलिए वो वैभव प्रकाश में गिनती की जाती है not full plenary portions. और ये पूर्ण विस्तार नहीं है भगवान के Then Braha is described as Vaibhava Prakash, which is surprising. वराह अवतार को भी वैभव प्रकाश में गिनती की जा रही है तो ये काफी आश्चर्यजनक है And then Hayagriva is the horse-headed incarnation of Lord Vishnu. और हैग्रीव भी वैभव प्रकाश रूपों में गणना की जाती है Is he described in the 11th canto also? क्या हैग्रीव अवतार के बारे में भी वर्णन 11वें Hayagriva incarnation. Well, I didn't know anything about Hayagriva, so I looked up Hayagriva on the net. You can find anything on the net these days. और इंटरनेट में मुझे देखना पड़ेगा
a very weird story. लेकिन बड़ी अजीब Very strange. कहानियां होती हैं Doesn't sit very well with devotees. और भक्तों के साथ में वो सही नहीं होती हैं। Once upon a time, there was a demon so powerful, nobody could kill him. और एक समय एक असुर था जो इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई नहीं मार सकता था। He declared, I can only be killed by somebody who has the head of a horse. और उसने एक घोषणा की थी कि मैं सिर्फ उन्हीं के द्वारा Well, मारा जाऊंगा जिसका Who has the head of a horse? सिर घोड़े का है। Nobody has the head of a horse. तो किसी का भी सर देवी देवता That could kill a demon, nobody has the head of a horse. तो किसी का भी सर घोड़े का नहीं था। So Lord Vishnu, of course, knew that he could only be killed by somebody who had the head of a horse. He knew that. और भगवान विष्णु भी ये जानते थे कि असुर सिर्फ उसी के द्वारा मारा जाएगा जिसका सिर घोड़े का है। So he has a bow, you know, in Vishnu incarnation, he has a bow. तो भगवान के विष्णु अवतार में भगवान के पास एक धनुष है Bowstring very tight. और उसकी जो प्रपंचा है वो बहुत कठोर है। Now this depiction is allegedly taken from the Vedas. और ये वेदों से ये चित्र लिया गया है। I don't think the Prabhupada ever commented on this. I don't think so. मुझे नहीं पता शायद ही प्रभुपाद ने इस पर कुछ टिप्पणी Yeah, if you do a Veda-based search for Hayagriva, only his disciple will come up. और अगर आप हयग्रीव It's true, you know, the co-founder of New Vrindavan along with Kirtananda, his name was Hayagriva Das. That's all will come up in Veda-base. वेदावेश में आप ढूंढेंगे तो सिर्फ एक हयग्रीव So you can't find out about you can't find out in a Veda-base about the original Hayagriva. और आप वास्तविक में जो हयग्रीव अवतार है उनके बारे में इतना So this is a bizarre story, bizarre. तो ये एक बाजार की एक कथा कहानी है। What happened is, Lord Vishnu had his bow, and it was very, very tight. He had a bow with an extremely tight धनुष है जिसमें bowstring. प्रपंचा बहुत ही कठोर So one day, a bug came along और एक दिन एक कीड़ा वहां पहुंचा and ate the bowstring. और उसने वो जो धनुष की प्रपंचा थी उसको वो खा गया And it broke with extreme, velocity, speed, and power. और इसकी वजह से जो प्रपंचा जब टूटी तो वो बहुत ही तेजी से टूटी While it was being held by Lord Vishnu. जब वो भगवान विष्णु के द्वारा पकड़ा हुआ था उस धनुष को उस समय। So we don't like this, but it says that it cut off the head of Lord Vishnu. Yeah, you heard me. ऐसा बताया जाता है कि वो प्रपंचा इतनी तेजी से टूटी कि उसमें भगवान विष्णु We don't के like गर्दन काट we don't like hearing this, but it's lila लेकिन हमें ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये लीला है भगवान की। coming from the Vedas. वेदों से ये कहानी कथा आती है। So he had to have a head, and there was a horse nearby. तो उनको एक सिर की आवश्यकता थी और पास में ही एक घोड़ा था Somehow or other, he got the head of the horse, और किसी प्रकार से उनको फिर वो अश्व का सर and it was दिया put गया। on Lord Vishnu. और फिर वो भगवान विष्णु पर लगाया गया। Jai! हरि बोल। Now you have Lord Vishnu with the head of a horse. तो अब आपके पास है भगवान विष्णु जिनका सर घोड़े का है। Now Lord Vishnu can kill the demon because he has the head of a horse, so he can kill the demon, you see? तो अब क्योंकि भगवान विष्णु का सर घोड़े का हो गया था तो अब वे उस असुर को मार सकते हैं। So the demons are not very smart, Maya Pratigana, so they couldn't figure out such a It's probably a true version of the Vedic version, probably, because otherwise how did Lord Vishnu end up with the head of a horse, you see? तो ये असुर ये नहीं समझ सकते माया प्रोहित ज्ञान वो सोच रहा था कि किसी का सर घोड़े का नहीं है लेकिन ये कथा से पता लगता है कि कैसे भगवान विष्णु को घोड़े का सर मिला और ये सही भी हो सकती है क्योंकि वेदों में वर्णित है। So there are so many Vaibhava Prakash forms. तो यहाँ पर कई सारे वैभव प्रकाश रूपों का वर्णन है। Kurma Matsya Narnarayan Rishi, पूर्व मत्स्य नर नारायण ऋषि Vraha Hayagriva, वराह हरिग्रीव Krishnagarbha. ऋषिगर्भ But oddly, Baladev is listed here as being amongst the Vaibhava Prakash forms. बलदेव जी का भी वर्णन है वैभव प्रकाश रूप के रूप में। Maybe it's one of the Narayan expansions. हो सकता है कि ये नारायण के विस्तार हैं बलदेव। Generally, Baladev that we worship is honored as plenary portion. Plenary portion means, the word plenary means full. तो जो भगवान बलराम जी का हम जिनकी उपासना करते हैं वे भगवान के पूर्ण अंश हैं
It is said that there's no difference between Krishna and Baladev except that Baladev has white complexion तो बताया जाता है कि भगवान कृष्ण और बलदेव में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अंतर है। and Krishna has blue-black complexion, the color of a monsoon rain cloud. और भगवान का जो मानसून का जो घन बादल होता है उसका रंग है। So Sarvabhauma, I don't know if this is referring to the Sarvabhauma of Caitanya Leela. सार्वभौम भी यहाँ पर मान्यत है। Different Sarvabhauma? I don't know. I can't. तो मुझे नहीं पता ये कौन से। It's counted as Vaibhava Prakash ये भी expansion. सार्वभौम वैभव प्रकाश It's में partial expansion. ये अंशावतार है। Even Vamana is counted as, in this list, as Vaibhava, वामन भगवान को भी वैभव रूप में गिनती हो रही है। and others are listed. और Others are also listed. Other incarnations are listed. और कई अन्य अवतारों का भी यहाँ वर्णन है। In the last few remaining minutes, I want to tell the story about this Shubhanga boy here. और मैं आपको ये त्रिभंग जो युवक हैं इनके बारे में बताऊंगा। Not an ordinary deity. ये कोई साधारण विग्रह नहीं है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Fasten your seatbelt on this one, okay? तो अब आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, टाइट हो जाइए तो सीट बेल्ट। Because it's beyond belief. क्योंकि ये This is a true story. लेकिन ये एक वास्तविक कथा है। Yes, I was in Malaysia मैं मलेशिया में था, at the main temple there. वहाँ जो मुख्य मंदिर है, Main temple is a Jagannath temple. वहाँ पर जो मुख्य मंदिर है वो जगन्नाथ मंदिर है। So there was one congregation member. तो वहाँ पर एक कांग्रेगेशन के भक्त थे One day he showed me his mobile phone, और उन्होंने एक दिन मुझे अपना मोबाइल दिखाया। on the mobile phone was a photo of Nilamadeva. और उस मोबाइल में भगवान नीलमाधव का एक चित्र था। I was thinking, oh, such a beautiful, cute deity. और मैं वो चित्र देख के मैंने सोचा वो कितने सुंदर ये भगवान का रूप है। I would like to have such a deity like that. और मैं ऐसे ही विग्रह की सेवा करना पसंद But I didn't say anything. I didn't say a single word. मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। Not necessary. He's the Supreme Personality of Godhead Paramatma. और भगवान निश्चित रूप से परमात्मा है, परम पूर्ण पुरुष। So he could understand my attraction for him. और फिर वे समझ गए मेरा उनके प्रति आकर्षण। He was in a very unfavorable situation. और वे बहुत ही प्रतिकूल अवस्था में थे। This devotee, Nilamadeva was staying with his sister. तो नीलमाधव भगवान एक भक्त के साथ में उनकी बहन के साथ रह रहे थे। His sister was a non-devotee Christian. और वो non-devotee अभक्त थी। Well, the probability she was non-veg, you know. और शायद वह मांसाहार भी करती थी। So he's stuck in the house of a non-veg woman. I'm sure she was giving him some fruits or this or that or something, you know, something to eat. She was giving him. I mean, she could understand he was a deity. और क्योंकि वो हालांकि मांसाहार करती थी, भगवान उसके साथ रह रहे थे, तो वो समझती थी कि विग्रह हैं, तो उनको फल शायद भगवान को अर्पित करती थी वो। But his secret message was, get me out of here. लेकिन भगवान का ये संदेश था। No devotee association, no kirtan, no nothing. This छिपा हुआ संदेश। woman who is not at all a devotee, a Christian, so-called Christian. भगवान ये संदेश दे रहे थे कि यहाँ कोई भक्तों का संग नहीं, कीर्तन Well, I नहीं। thought, well, he's very cute. It would be nice to have a deity like that. और मैंने जब ये चित्र देखा तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि But I kept my mouth shut. I didn't say anything. लेकिन मैंने अपना मुंह बंद I रखा thought I have so many Jagannaths already. और मैंने कुछ भी नहीं कहा। But you can't fool Krishna. He's the Paramatma. लेकिन भगवान कृष्ण परमात्मा है, So he detected my attraction for him. तो उन्होंने मेरा उनके प्रति आकर्षण देख लिया। So this temple is the main temple, capital city of Malaysia. मलेशिया में ये मुख्य मंदिर है, Jagannath, Baladev, and Subhadra. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का। One night, तो एक रात the Jagannath of the Jagannath, Baladev, and Subhadra temple appeared in a dream. He had a brother, this devotee with the mobile phone, he had a brother that lived in the temple. और वो जो भक्त जिन्होंने मुझे ये भगवान के विग्रह का चित्र दिखाया था, उनका भाई मंदिर में रहता था। That Jagannath appeared in a dream to the devotee who lived in the temple. जो मंदिर में जो भक्त रहते थे, उनको भगवान मंदिर के जो जगन्नाथ जी हैं वो प्रकट हुए। The temple Jagannath said, give Nilamadeva to Maharaj. और
So I was sitting in my room one day, and in comes Nila Madhava. और एक दिन मैं अपने मुख्य कक्ष में था और फिर वो भक्त I was ecstatic. लेके आए। He saw I was attracted to him, so he came to me. I didn't go seeking him out. और क्योंकि भगवान ने देख लिया कि मैं उनके प्रति आकर्षित हूँ तो वो मेरे पास आ गए That's how I got him. और इस प्रकार से मुझे Don't go away yet. That's only part of the story. और सिर्फ यही एक भाग नहीं है इस कहानी का The rest of the story is, hey, where did he come from anyways? Where did he originally come from? और आगे का भाग ये भी बाकी है कि वास्तव में ये विग्रह आए कहाँ से। That devotee who lived in the temple at that time, he, when he was in childhood, he had polio. और जो भक्त मंदिर में रह रहे थे बचपन में उनको एक बीमारी हुई पोलियो So he had a brace on his leg because it cripples you, you know. और उनके पैर थोड़ा पंगु हो गए वो उनके पैर से So he went to the temple, Jagannath temple in Puri. तो वे जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो है वहाँ गए The pandas and the guards said, you can't come in. तो उन गार्ड्स ने और पांडवों ने कहा कि तुम अंदर नहीं They pointed at his brace. He said, that's a shoe. तो उन्होंने कहा कि ये एक जूता है जो आपके पैर में They did not allow him to go in because of the brace on his leg. क्योंकि उन्होंने ब्रेस पहना हुआ था अपने पैर में तो उन्होंने कहा ये जूता है तो आप Well, it had a little padding on the bottom that would touch the ground, so they said, it's a shoe. You can't come in. तो उसमें जो सपोर्ट पैड के लिए जो दिया गया था उसमें थोड़ा पार्ट ऐसा था जो जूते के समान था और जमीन से टच हो रहा था तो Of course, he was very disappointed. Indian body, you know, not an American Western body, Indian body. वो भक्त हालांकि भारतीय शरीर में थे लेकिन फिर भी वो बहुत So he was too much disappointed, you know, not being allowed into the temple. बहुत निराश हो गए कि उनको मंदिर में नहीं आने दिया गया Suddenly, a little old man came out of the temple, और अचानक से एक छोटा सा बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया उस जगह मंदिर took him by the hand, और उससे हाथ पकड़ and said, come with me. उसने कहा Yes. मेरे साथ आओ The little old man took him by the hand, took him in the temple, past the guards, past the pandas. Nobody said anything. और वो बुजुर्ग व्यक्ति उन भक्त को मंदिर में अंदर ले गए किसी गार्ड ने कुछ भी नहीं कहा They all remained silent. और वे सब चुपचाप रहे The little old man took him up front for an intimate darshan with Lord Jagannath. और फिर वे भगवान के अंतरंग दर्शन के लिए उस Haribo! Ajba Jagannath Swami ki jai. So then, another time he came back to Puri, और फिर दूसरी बार जब वो भक्त पुरी पहुंचे and he didn't even try to go into the temple because he knew that they would stop him, so he didn't even try. तो उस भक्त ने प्रयास भी नहीं किया मंदिर के अंदर जाने का क्योंकि वो जानते थे कि न रोका जाएगा So he just stood outside the entrance to the temple. और मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर ही वो खड़े हो गए Suddenly, और अचानक से the same little old man came out of the temple, और फिर अचानक से वही बुजुर्ग व्यक्ति छोटे व्यक्ति बाहर आए took him by the hand, उनको हाथ से पकड़ा and said, come with me. और उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो Well, I didn't say anything at this point in the story, but I was a little suspicious. मैंने जब वो मुझे बता रहे थे तो मैंने This is a little too abnormal, you know. मुझे थोड़ा संदेह हुआ मुझे लगा ये असामान्य So again, he took this devotee, the little old man took the devotee into the temple, और फिर से वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे छोटे वो and again he had an intimate darshan with Lord Jagannath. और फिर से उन्होंने उनको भगवान जगन्नाथ के अंतरंग दर्शन कराए But he had been disallowed by the pandas and the guards. और फिर उनको गार्ड्स और पांडवों ने रोका Who was that little old man? तो वो बुजुर्ग किसी में नहीं रोका तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन था छोटा I had my suspicions तो मुझे इस पे बहुत संदेह हुआ कि वो कौन है after hearing this. इस कहानी को सुनने के बाद So one night, that devotee that lived in the temple, और जो भक्त मंदिर में रहते थे तो एक रात को the Lord Jagannath of that temple appeared to him in a dream. और भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए Lord Jagannath had ordered him, और फिर भगवान जगन्नाथ ने उनको आदेश दिया give Nilamadava to Maharaj. तो उन्होंने The order of Lord Jagannath. Haribo. भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि नील महाराज Haribo. So that's how I got Nilamadava sitting in my room, and he comes walking in, so to speak, all of a sudden. I had no prior knowledge. तो मुझे पहले से कुछ भी ज्ञात नहीं था और वो भक्त नील माधव को लेके मेरे कमरे में आए
So he's not an ordinary deity. तो ये नील माधव कोई साधारण विग्रह नहीं है Very wonderful, very magical. और बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही जादूगर है Okay, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai.